hosting a webinar on retirement planning. Hello my dear aspirants, a very good morning to all of you. Welcome to Abinash Pathshala. Daily GS quick revision session को समस्त welcome करीबी. Before I proceed, I just need to confirm तो मैंने ठीक से सुनी पढ़चो and देखी पढ़चो. If everything is running fine, do let me know in the comment section, guys. We will start the session. now आज हमें salient feature of Indian Constitution discussion करीबा. जो उधर direct question हम exam रे आसुची and those are factual questions, right? So you will get a question for sure from that part, right? तो समस्त क्लियर अच्छी देखी पार्छ पिले ठीक ठाक या ऑल क्लियर okay so salient feature of Indian Constitution, I think समस्त very good morning समस्त को या टिके मु लिंक टिके शेयर करनो छी, तमाने भी टिके लिंक शेयर करनियो हैला. Yeah, audible and visible. Yeah, thank you. Okay, so मु फाइल शेयर करूची, आमे सेशन स्टार्ट करिया. जस्ट अ सेकेंड. Is it visible? समस्त को देखा होची बेले? समस्त को देखा होची? एटा स्टडी आईक्यू रो एसआईपी वाला बुक जोड़ा मु तमन को कहितली कि एई बुक रो तमन को पढियार अछि बेले. नॉर्मली तमे देखिया को जीवो जदी एई बुक रो काफी सारा क्वेश्चन ने एग्जाम रे डायरेक्टली क्लिक होची बेले. ठीक अछि. आउ ए बुक रो नोट्स मु शेयर करबी जो गुडा इंपोर्टेंट पार्ट अछि. तुम मैंने बुक किनी पारियो बट फॉर नाउ तुम्हें न किनले चलियो बिकॉज जो मासे अच्छे एग्जाम तुम्हें सारी पारिबनी सब जिनस को है ना. तो यस ठीक अच्छे. साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें डिस्कशन करवा एंड यू कैन सी हियर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ बोरोड फीचर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. मैंने जानिछ सेतेबेले आमे ब्रिटिश अंडर रे थिलु एंड गोटे न्यू पैटर्न को आम देश आसूला से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होबार थिला. तो से टाइम रे जो आमे जो डोमिनियन अंडर रे थिलो आमे सेतेबेले कोन कलु ना बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिकी. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेवरल यूनिक फीचर. केते सारा तार यूनिक फीचर अछि व्हिच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन. Salient feature of our constitution flow directly and indirectly from the preamble, which indicates the faith of the framers in the ideals, objectives and the goals as mentioned in the constitution, right? So yeah, very good morning. So feature कौन आसीबो जदि पचला write down some features of Indian constitution. You can start writing with the lengthiest written constitution in the world. So this is the lengthiest written constitution. Why? Because it has 465 articles divided into 25 parts. दिनों को दिनों ऐड भी होची, डिलीट भी होची, अमेंडमेंट थ्रो रे एंड 12 शेड्यूल. रीजन कौन थिला यार? चारिटा रीजन पिले यार तो मैंने देखी पारतो बेटी. वन इज जोग्राफिकल फैक्टर्स. यदि कई पचाल इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन कौन पाई लेंथीएस्ट हैला बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन इज जोग्राफिकल फैक्टर. वास्टनेस ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर. हिस्ट्रिकल फैक्टर, influence of government of India Act, single constitution for the state as well as for the center, and domination of legal luminaries. तो तुम्हें देखी थी वो there are so many lawyers were there in the framer जो माने थिले इंडियन या पूर्व हमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखी थी. यस सही तेरे डोमिनियंस माने अधिका थिले हमारे लीगल लुमिनरीज, राइट. सो दैट इज द फैक्टर. These are the factors which affect this lengthiest written constitution, right? And drawn from various resources. So B.R. Ambedkar, the constitution India has framed after
ransacking all the known constitution of the world. Okay. Structural part Government of India Act 1935 almost 60 to 70% part of the philosophical part, the fundamental right DPSP is there. Political part British Constitution. Okay. Then is very important feature blend of rigidity and flexibility. So rigidity and flexibility मानने को ना ये पूरा rigid ना ये पूरा flexible. Some parts can be amended, some parts cannot be amended. So say पाई कौन थी rigidity, blend of rigidity and flexibility. Two types of amendments are there. One is with special majority of parliament, 2/3 president voting, supported by more than 50%. Another one is special majority of the parliament with ratification of half of the total strength of the total states, right? With simple majority. Some provision can be amended by simple majority. So this is all about amendment, right? And basic feature cannot be. Yes. So that's why rigid and flexible kuha jauchi. Federal system with unitary bias. Amar jo system of government achi. This is federal system achi with unitary bias. तमें देखी थे वो emergency provision है ना हमें से feature गुड़ा discussion करिबा जे unitary feature को गुड़ा रहला federal feature को गुड़ा रहला. Yes, right. तो federal feature देखो इटी dual government है गला, division of powers है गला, written constitution, supremacy of the constitution, rigidity of the constitution, independent judiciary and bicameralism. So these are federal feature. Unitary feature कौन कौन रहला? Strong center, single constitution, single citizenship, integrated judiciary, governors, है ना, IAS, emergency provision. So these are the things. ये गुड़ा ये feature गुड़ा कौन करची ना हमारा unitary feature गुड़ा का. ठीक है? Okay. Then is parliamentary form of government. आमर जो होची parliamentary form of government. Parliamentary form of government is all about what? The cooperation and coordination between legislature and the executive organ. ठीक है? Right? So ये होची हमारा parliamentary form of government अच्छी. Collective responsibility of the executive to the legislature. This is the most important feature in the parliamentary form of government. ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ନୋମିନାଲ ରିଅଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରହିଲା, ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି ରୁଲ୍ ଆମର ଚାଲିଛି, ଡବଲ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଛି है ना, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस. ओके. देन इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एज वेल एज जुडिशियल सुप्रीमासी. এইগুড়া হচ্ছে পয়েন্ট গাইজ যেটা তুমি লিখিলে যেমনি মেন্সরে তার ফিচর্স সাইলেন্ট ফিচর পড়িছি এইগুড়া লিখিব তুমি you will get mark for sure. Synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Now Indian parliamentary system रे कौन अच्छी synthesis of British principle of parliamentary sovereignty अच्छी and American principle of judicial supremacy अच्छी. Supreme Court can declare parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. That's why judicial supremacy को अच्छी. And parliament can amend major portion of the constitution. That's why parliamentary sovereignty को अच्छी. बुझी पारछ तो. So एटा होची कथा जे पार्लियामेंट पाखरे सोवरेनिटी अच्छी एज वेल एज जुडिशियरी पाखरे सुप्रीमेसी अच्छी. जुडिशियरी फाइनली चेक करिवो whether the law is valid or not. बुझी पारछ तो. Then is integrated and independent judiciary. Supreme Court is the guarantor of the fundamental rights of the citizen and the guardian of the constitution. है ना. तो guardian of Indian constitution is Supreme Court. Okay. President लिखिबनी है ना. इटा होची कथा because UPSC रे क्वेश्चन आस्तला and finally UPSC ये करतला जे नहीं इटा होची Supreme Court हबो है ना. is a guarantor of the fundamental rights of the okay. Integrated Supreme Court, High Court, lower courts enforce both union and state laws, right? Independent, security of the tenure of the judges of Supreme Court and High Court, all expenses are charged on the consolidated fund. तो यही गुड़ा होची तमरो integrated and independency of the judiciary. Then salient feature भितर तमे fundamental rights लेखि परिबो. DPSP, fundamental duties, हैला. आमर होची secular state. We have a secular state. How the Western concept of secularism connotes a complete separation between religion and the state.
आम सेक्युलरिज्म को फॉलो कर कि नहीं इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कैनॉट गिविंग रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस और ट्रीटिंग प्लस ऑल रिलीजियस इक्वली राइट सब देख स्टेट रो निजर किसी रिलीजन नहीं बट स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड स्टेट रेस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजियंस तो स्टेट आखिया करे सब रिलीजन इक्वल स्टेट हैज नो रिलीजन स्टेट माने आम देश कथा पड़ी द सेक्युलर वाज added in the preamble at a 42nd constitutional amendment act that doesn't mean that India secularism को follow करना था ठीक है idea of secularism was reflected in preamble 14 preamble ले reflect होची article 14 रे secularism 15 16 25 to 30 article 44 so एई तरह सब reflect होची इटा okay we have a universal adult franchise voting age जोटा रिड्यूस होता 18 वर्ष को 21 वर्ष रु 1989 रे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे तो आमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज अच्छी एटी वोटिंग राइट अच्छी बट सर्टेन एज दिखाई जे 18 वर्ष रही लोक इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट है ना प्लेस ऑफ बर्थ से माने वोट करि पारिबे इंडिपेंडेंट बॉडीज अच्छी आमर काफी सारा बॉडीज आर एनविसेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेट लाइक इलेक्शन कमिशन यूपीएससी हो गला सीएजी एमाने सब इंडिपेंडेंट बॉडीज इमरजेंसी प्रोविजन आमर रहा है ना नेशनल इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट्स रूल हो गला एंड आम ऑलरेडी गोटे डिस्कस कर सर इमरजेंसी टाइम रे कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन yes then we have this three tier government is a very important feature the democratic decentralization by establishing PRIs panchayat raj institutions and upare rahile union tapare state ta tole local bodies ana so urban local and rural local so this is 73rd constitutional amendment act 1992 and urban local bodies tamar 74th ठीक है सो ये हूँ थ्री टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो जिते भी फीचर अच्छे तुम मेंशन कर पार 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 2011 गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओके फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज 19(1)(c) रे मेंशन अच्छी डीपीएसपी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 43(b) रे अच्छी एंड न्यू चैप्टर ऐड कराई पार्ट 9(b) रे पार्लियामेंट इज द पावर टू रेगुलेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज multi-state cooperative societies. So these are the points which you have to remember. These are the salient feature of Indian Constitution. वाला यही गला हमारा. Then हमें sources को देखी दबा. Sources रो question आसुची बिले direct. पूर्व वर्ष ही question आस्ते लगे language of preamble कोड बोरो कराई ची. So Australia थिला. तो देखी दियो अटा को बोल से. तो most of the parts Government of India Act 1935. देखो केते सारा जिनिस अछि जोटा मु तमन को मेंशन करी बेटी. Federal scheme ही गला Office of Governor ही गला. Very important. जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं गला इमरजेंसी प्रोविजन गाइस वेरी इंपोर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजन टा 1935 रे अछि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट इज आगो को हम पड़ी हैला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हे गला रूल ऑफ लॉ हे गला लेजिस्लेटिव सिंगल सिटीजनशिप हे गला कैबिनेट सिस्टम हे गला प्रेरोगेटिव रिट्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाइकैमरलिज्म सो दीज आर from British Constitution, US Constitution rule. Fundamental rights, independent judiciary, judicial review, impeachment of the president, Article 61 bala, removal of Supreme Court judges, High Court judges, post of Vice President. ठीक है? Okay. हाँ. Idea of preamble also. Then is Irish Constitution, Ireland Constitution. गोटे तुम्हें सब बड़े जानते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तापर देखो नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा रे अछंती. Method of election of the president is also. The method of election of president very important. ये तीन टा को मने रखियो तुमने. Okay. Then we have Canadian Constitution, a federation with a strong center. एटा पचारुची बार पिले. Restitutory power जो center पाकर रहिबो. Appointment of state governors by the center. Appointment right. Governors office of governor is 1935, but appointment is by the center from Canadian Constitution. ठीक है? Australian Constitution concurrent list, freedom of trade, commerce, intercourse, joint sitting of the two house and language of the preamble. ठीक है? Weimar Constitution रू देखो Weimar Constitution देखो
emergency provision is 1935. Suspension of fundamental right during emergency is Weimar Constitution. ठीक है. Then fundamental duties, ideal justice. हमारा fundamental duties होची USSR Constitution Soviet Union जोड़ा है ना. Ideal of justice जो social economy political वाला preamble है सेटा भी USSR Constitution रो अछि. Then French Constitution रे कौन अछि? French Constitution रो हमारे republic and ideals of liberty, equality and fraternity. South African Constitution do procedure of amendment of the Constitution. Very very important guys. है ना. Procedure of the amendment of the Constitution. Election of the members of Rajya Sabha is also here. Japanese Constitution do procedure established by law. So इतनी जिनसे तो तुमने को निहाती जाने यार दरकार या भीतर गोटे क्वेश्चन पक्का तुमने पाई जाओ है ना. बाकी schedule हमारा अच्छी. Initially we have 8 schedule तापर 4टा schedule add है ला. Schedule तो मैंने मने रखी थी वो समझते आशा कोर्च मने थी बना समझते है ना. देखी थी वो गोटा कोट. First schedule देखो name. Second, third आउ fourth को एक संगे पढ़िबो सॉस कही के है ला. ये होची सैलरी ओथ आउ सीट कौन सीट टू द राज्य सभा टू द स्टेट्स एंड सीट इन राज्य सभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज स्टेट आउ यूटी रू जो सीट राज्य सभा पई. फोर्थ शेड्यूल ओथ एफर्मेशन हो गला. ओथ एफर्मेशन कहारा यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर हो गले. एमएलए एमपीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गले हमर सीएजी. ठीक अछि. हाँ चला तापर हूँ आमर कौन अच्छी देख ऊपर आमर अच्छे देख सैलरीज कहार है नॉट मेंशन कथा भी टिके देख ये एमान कथा मेंशन नहीं बाकी समस्त मेंशन अच्छी बुझिपारछ. देन वी हैव फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल अबाउट शेड्यूल एरियाज जमती एटा शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एटा हूँ ट्राइबल एरिया खाली. सिक्स्थ शेड्यूल ट्राइबल एरिया पर्टिकुलर स्टेट कौन कौन आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम AMTM कही मन रखो AMTM. ठीक अच्छे. सेवेंथ शेड्यूल होची डिवीजन ऑफ पावर DOP डिवीजन ऑफ पावर. यूनियन लिस्ट अच्छी 100टा आइटम. स्टेट लिस्ट 61 कनकरेंट लिस्ट 52 आइटम. ए आइटम ऊपर क्वेश्चन पचार. हाँ देन 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी आमर है 8th शेड्यूल. आउ देख तो माने लास्ट को कौन कौन ऐड होता 92nd अमेंडमेंट देख बोडो डोगरी मैथिली सांताली. 21st अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे ऐड होती से देख दियो. 96th रे ओडिया ऐड है. 71st रे कोंकणी मणिपुरी नेपाली. 21st रे सिंधी. इनिशियली हमर 14टा थिला पर 8टा ऐड होती. ओके देन वी हैव 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल ऐड होती फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे जो द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर मैटर्स टू बी प्लेस्ड बाय सेंटर एंड सेंटर हमें कोई सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन. 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ. और 73rd 74 तुम्हें समस्त जानछ पंचायती राज और आमर म्युनिसिपालिटी. एटी 29टा आइटम अच्छी एटी 18टा आइटम अच्छी. ठीक अच्छे. 243G और 243W. ओके ये हूँ कथा बोले डन. आज संडे अच्छी तो मैंने मैक्सिमम पढ़ मैंने समस्त जानी मोटे ग्रुप बनई व्हाट्सएप रे जो मुझे पिला आम ग्रुप डिस्कसन करवा जमी आम टास्क नहीं छुए जे पीवाई क्यू आम करवा यही गोटे दिन भितर आजिकाली भितर आम पॉलिटी इंडियन पॉलिटी जिते भी क्वेश्चन आसे 2018 ऑनवर्ड्स नहीं कि OCS रे से गुड़ा आम डिस्कसन कर जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा तो मैंने जॉइन कर. यू कैन व्हाट्सअप हियर 7410100506 नंबर व्हाट्सअप कर to be added in the group. Condition being you must be serious there. है ठीक है चल. So this is about today's session. Thank you very much for this lovely support. देखा नेक्स्ट सेशन रे. जय जगन्नाथ.